ऑल राइट, हेलो क्यूरियस पीपल। और आज बहुत ही एक्साइटिंग डे है क्योंकि आज होने वाला है अनाउंसमेंट ऑफ द नोबेल फिजिक्स प्राइज। हेलो, अगर मेरी आवाज़ आ रही है क्योंकि मुझे दोनों अटकते हुए दिख गए हैं। लेट मी कंफर्म इफ माय इंटरनेट इज वर्किंग और नॉट। हेलो। आ रही है आवाज। यस यस, आ रही है ना? ओके परफेक्ट। बीच में लगता है मेरा इंटरनेट इशू हो गया था। एनीवे सो फिजिक्स नोबेल प्राइज का टाइम हो चुका है और सबसे पहले कुछ स्पेकुलेशंस देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग स्ट्रीमिंग के ऊपर भी जाएंगे। बिकॉज आई कैन सी नाउ कि अभी कॉन्फ्रेंस तो स्टार्ट हो गई, तो मैं एक काम करता हूँ। अभी 2 मिनट में मैं स्क्रीन शेयर करूंगा बिकॉज वो 3:15 के आसपास शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं राजन से पूछना चाहता हूँ कि क्वांटम कंप्यूटिंग के क्या चांसेस हैं फिजिक्स नोबेल प्राइज के, जिसमें डेविड डॉइश और पीटर शोर का नाम आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मेरे ख्याल से मिलना तो नहीं चाहिए। हाँ, मैंने कुछ समय पहले लगभग एक हफ्ते पहले डाला था अपनी स्टोरी पे भी कि जो नोबेल प्राइज है वो डेविड डॉच और पीटर शोर को मिलना चाहिए, और स्टार्ट किया क्वांटम कंप्यूटिंग, काफी सारा वर्क भी हो गया, अब उस पे अचीवमेंट्स भी काफी सारी देखने को मिल रही हैं। ऑल्दो सारे क्लेम्स करते रहते हैं अलग अलग नेशंस की, हमने अचीव कर लिया है क्वांटम सुपरमेसी, हमने कर लिया है, उतनी हद तक की नहीं होती है, बट स्टिल काफी सारे प्रूफ्स हमें देखने को मिलते हैं कि चीजें काफी ज्यादा आगे निकल चुकी हैं उसमें। तो सिर्फ एक फिक्शनल वाला पार्ट तो नहीं कह पाएंगे अब क्वांटम कंप्यूटिंग को, तो आई थिंक इट डिजर्व्स नोबेल प्राइज। और क्योंकि जो क्रिएटर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है, स्टार्ट कहूंगा मैं इसको, हाँ, डेविड डॉच और पीटर शोर जो है, उन्होंने एक एल्गोरिदम दी थी, बहुत ही ज्यादा फेमस है, और कहते हैं कि पूरी की पूरी क्रिप्टोग्राफी को हिला के रख देगी, एनक्रिप्शन मेथड्स को, मेनली आरएसए मेथड को, जिसको सबसे पावरफुल माना जाता है। कहते हैं ना कि एक हमें एल्गोरिदम या कोड ब्रेक करने में या कोई एनक्रिप्शन ब्रेक करने में हजारों करोड़ों साल लग जाएंगे, शायद एज ऑफ द यूनिवर्स जितना भी समय लग जाएगा एक एनक्रिप्शन मेथड को ब्रेक करने में, वो आरएसए ही है, सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन पे बेस्ड होता है। तो उसको ब्रेक किया जा सकता है बहुत ही ज्यादा इजीली यूजिंग शोर्स थ्योरम, तो वो उन्होंने बताया था सबसे पहले, यूजिंग अ क्वांटम कंप्यूटर ऑब्वियसली। और जो डेविड डॉच है, उन्होंने फाउंडेशन रखी थी, मतलब वो वन ऑफ द फर्स्ट थे जिन्होंने क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में बताया था थ्योरेटिकली। तो आई थिंक इनको मिलना चाहिए जरूर। वाओ, और ये लाइक्लीहुड लग भी रहा है क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग के हम लोग को इतनी फंडिंग मिल रही है। और सब लोग फंडिंग जब इंडिया में आ जानते हैं रही है। राजन इज वेरी नोन फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग। वो अभी रिसेंटली मणिपाल में लाइक टॉक देकर आया एंड ही इज आल्सो गोइंग टू आईआईटी बॉम्बे ड्यूरिंग देयर टेक फेस्ट फॉर अ टॉक। तो क्वांटम कंप्यूटिंग के मामले में राजन काफी एक्टिवली लाइक बात करता रहता है। ही इज एक्टिवली डूइंग लाइक वर्क ऑन दैट एक्टिवली, एकदम डीप लेवल। एक होता है ऊपर लेवल पे एंड ही इज गोइंग टू मैथमेटिक्स, सो ही हैज दैट इनसाइट्स। लेकिन बात ये आती है कि देयर इज अ स्मॉल चांस कि शायद या तो हाई एनर्जी फिजिक्स में जाए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मे बी अल्ट्रा हाई एनर्जी न्यूट्रियंस जो है उस साइड जा सकता है शायद। कुछ लोगों का स्पेकुलेशन है कि मे बी इन्फ्लेशन साइड जा सकता है, जो एलन ग्यूथ और अदर लाइक दो रिसर्चर उनके साथ है। तो सौरभ, एक बार इन्फ्लेशन समझा सकते हो कि एग्जैक्टली इन्फ्लेशन क्या है एंड क्या इस चीज को नोबेल प्राइज मिल सकता है? ओके, सो मैं थोड़ा ब्रीफ में बता सकता हूँ, बट ऑल्दो दिस इज नॉट माय डोमेन ऑफ एक्सपर्टीज, तो थोड़ा सा इसमें मुझे भी ब्लरी ब्लरी है। बट इन्फ्लेशन इज यूजुअली दिस वेरी अर्ली यूनिवर्सल concept, बिग बैंग हुआ एंड द यूनिवर्स। ओके, so universe started from the big bang, and for where it started inflating and it's accelerating right now. ठीक है, तो accelerating and expanding at the moment. So this early universe inflation, that is something uh, जो काफी ज्यादा वेल नोन है, वेल एस्टैब्लिश्ड एक चीज है, वन ऑफ द मेजर थियरीज। इट कुड बी कि ऐसा हो पाए कि शायद एलन गुड, हु इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ इन्फ्लेशन थ्योरी एंड अदर्स प्रोबेबली, शायद उनको मिला जाए। या आई थिंक इट डिपेंड्स। सो क्वांटम थ्योरी, जैसे जैसे राजन और तुमने कहा कि क्वांटम थ्योरीज and quantum computing, this which is like an emerging field right now, right? It's going to inflate in itself in some time. Possibilities हैं, but at least in my opinion, what I think कि every other year, or at least every other 2 years, it is awarded to mostly astronomy, cosmology, or high energy physics related phenomenon. So it is also high chance कि इस बार शायद possibilities ज़्यादा हो for astronomy or cosmology or this this branch of
physics. Because last 2 years से I have seen that. So last year it was attosecond laser को, and उससे पहले it was उससे पहले भी I बेल्स think it was इनइक्वालिटी, Bell's क्वांटम inequality term, इंफॉर्मेशन, yes, Bell's quantum information related. So that would make high chance कि शायद उसी related field में ना हो, because they want to diverse as well. और they actually I didn't know this before, but वो लोग ballot डालते हैं, ठीक है, तो बैलेट डालते हैं वो यस और नो करके कि भाई कितने इतने नॉमिनेशंस हैं, कमेटी बैठेगी, तुम डालोगे भाई कौन सा तुम्हें चाहिए डेमोक्रेसी के साथ, एंड नंबर ऑफ वोट्स पे डिपेंड करता है, एंड देन वो मिलेगा. सो इन्फ्लेशन वाला आई डोंट नो हाउ यू गॉट दीस न्यूज़ एनीवे, बट इट कुड बी समथिंग व्हिच कैन व्हिच इज पॉसिबल, नोबल विनिंग. स्पेकुलेशंस है, कोई ऐसा तो है नहीं कि अंदर की बात बाहर आई है. जिन जिन लोगों के वही. काम है और लोगों ने इतने सारे ट्रेंड्स देखे हैं, उसके बेसिस पे काफी सारे स्पेकुलेशंस आए हुए हैं. तो ये बात तो सच है कि स्पेकुलेशंस के बेसिस पे हम लोग बात करें. क्वांटम कंप्यूटर और इन्फ्लेशन में डिफरेंस ये आ जा रहा है कि क्वांटम कंप्यूटर्स को हम लोगों को पता है कि ऑब्जेक्टिवली काम कर रहा है, उसके एप्लीकेशन हम लोग देख रहे हैं. बट एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, ऑल्दो ज्यादातर एविडेंस फेवर करते हैं. बट वहां पर कॉस्मोलॉजी वाली जब पार्ट आ जाता है, जब हम लोग के इतने हाईली एम्पेरिकल एविडेंसेस पे रिलाई करने पड़ते हैं, रिलायबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, तो यहाँ पर थोड़ा क्वांटम कंप्यूटर की तरफ लाइक फेवर ज्यादा जा सकता है. प्लस अभी का टाइम भी ऐसा है कि अल्फ्रेड नोबेल ने ये बोला था कि नोबेल प्राइज उस चीज को मिलना चाहिए जो ह्यूमैनिटी की हेल्प के लिए, उनके मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए काम आएगा. और पूरी फिजिक्स मैनकाइंड के बेनिफिट में काम आती है, बट इमीडिएट जो काम आ रही है वो क्वांटम कंप्यूटिंग होते हुए दिख रही है. अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो नोबेल प्राइज के नॉमिनेशन कैसे होते हैं, जिनको नहीं पता ये बता दिया जाए कि नोबेल प्राइज के नॉमिनेशन काफी इंटरेस्टिंग होते हैं. नोबेल प्राइज के नॉमिनेशन या तो जो स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज है जो स्टॉकहोम स्वीडन में है, वो लोग नॉमिनेट कर सकते हैं, या तो वो लोग जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है वो नॉमिनेट कर सकते हैं. अब हियर्स द थिंग, कौन नॉमिनेट किसको कर रहा है, ये नाम 50 साल बाद रिवील होगा. मतलब अगर 2024 में नोबेल प्राइज मिल गया है तो 2049 में ये रिवील होगा कि किसने नॉमिनेट किया था. सॉरी, गलत बोल दिया, और ज्यादा कौन रिलीज लोग होगा, नॉमिनेट हुए थे. नॉमिनेट होंगे, राइट. तो बहुत ही लाइक इंटरेस्टिंग चीज है कि 2074 में ये रिलीज होगा फिर कि किसने नॉमिनेट किया था. तो ये नोबेल प्राइज के बारे में ये सारी चीजें थी. एक और बात ये कि चलो अल्फ्रेड नोबेल के बारे में डिस्कस करते हैं. तो राजन, कुछ आपको नोबेल के बारे में या फिर अल्फ्रेड नोबेल या फिर पूरे नोबेल प्राइज का ये जो हमारा सीन है, इसके बारे में क्या कहना है? मतलब इन जनरल बात करें ना. हाँ, इन जनरल. हाँ, तो मेरे ख्याल से उसने जो अल्फ्रेड नोबेल थे उन्होंने डायनामाइट बनाया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना. तो Yes. उन्होंने ऐसा सोचा था कि जितना मैंने पढ़ा है, देखो मेरे को भी एग्जैक्ट नहीं पता कि स्टोरी ट्रू है या नहीं, बट उन्होंने ऐसा डायनामाइट बनाया था. तो उन्होंने सोचा कि 1900 से मेरी जितनी भी संपत्ति है या जितनी भी प्रॉपर्टी एंड ऑल है वो सारी जाएगी. अब जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उन पे कुछ प्राइज रहेगा. तो 1901 से स्टार्ट किया नोबेल प्राइज को देना, और देखते देखते तो बहुत बड़ा प्राइज बन गया, क्योंकि अमाउंट भी उसके साथ काफी ज्यादा देते थे उस समय पे. और मेरे को इसलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि मैं मैथमेटिकल बैकग्राउंड से, और मैथमेटिक्स के लिए कोई नोबेल प्राइज नहीं होता है. तो फिर मेरे को जानना था कि भाई ऐसा क्यों है, ये कैसी बात है, मैथमेटिक्स को तुम क्या साइंस नहीं मानते हो क्या? ये तो गलत बात है बिल्कुल. ऑल्दो उसके लिए भी बहुत बड़े बड़े प्राइजेस हैं, बट नोबेल प्राइज अगर सारे सब्जेक्ट के लिए दे रहे हो, सारे साइंसेस के लिए, तो मैथ के लिए भी देना चाहिए. बट उसके पीछे भी काफी सारी स्टोरीज मेरे को सुनने को मिली कि कुछ तो अल्फ्रेड नोबेल की वाइफ का था, कुछ अफेयर था मैथमेटिशियन के साथ, जिसके प्रतिशोध में उसने कहा कि मैथ को तो नहीं देंगे भाई. मतलब ये एक स्टोरी है, मैंने अच्छे रिसोर्सेज से पढ़ी थी, तो झूठ तो नहीं होनी चाहिए. बट ऐसा था कि अल्फ्रेड नोबेल की वाइफ का कुछ तो अफेयर था, जिसके कारण वो उन्होंने कहा था कि मैथ को तो नहीं देंगे. वो मैथ को मानते ही नहीं थे, एक्चुअल साइंस नहीं मानते थे वो. अच्छा. इट इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे ख्याल से. वाओ. सौरभ, तुम्हारा कोई इनसाइट्स है इस बारे में? Insight, like Rajan already said, many stuff कि क्या सीन होता है नोबेल प्राइज का. I think it's highly subjective as well कि कौन किस काम को ज़्यादा अहमियत देता है, ज़्यादा significant मानता है, right, at that particular time. और कभी ऐसा भी होता है उस टाइम पे हमें उसकी अहमियत नहीं पता लगी हो,
बट इट्स रेवोल्यूशनरी। अब 50 साल बाद जाकर हमें पता लगा कि भाई उस टाइम पे काफी रेवोल्यूशनरी, तो उसको एज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड करके इज गिवन समथिंग लाइक रॉजर पेंरोज फॉर इंस्टेंस, right? He gave his singularity theorems and all about कि black hole form होता है, and singularity is a robust prediction of general theory of relativity, right? And उसके लिए he was awarded so much after, और दिया उन्होंने कब था. So I think it really depends who is in the committee as well, and how well they actually nominate, and this procedure, although I don't know in much detail कि भाई चलता क्या है इनके background में. अगर जीनियस सीरीज का रेफरेंस दूं तो उसमें भी थोड़ा बहुत इसका इम्प्लीकेशन दिया हुआ है कि आइंस्टाइन का नोबेल प्राइज जो था फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो बहुत ही ज़्यादा टाइम तक डिले किया गया था ड्यू टू बहुत सम ज्यादा, पीपल। हाँ। अब एक वेल डॉक्यूमेंटेड सीरीज में बनाया और जो कि नेशनल ज्योग्राफी ने पूरा वो किया है, तो आई थिंक उन्होंने बहुत ही वेल रिसर्च करके इस बारे में बात की होगी। और दूसरी चीज़ की राजन ने एक बहुत बढ़िया सी बात रखी कि मैथमेटिक्स तो नोबेल प्राइज में है ही नहीं, साथ साथ में उस किसी भी फील्ड को नोबेल प्राइज नहीं मिलता है जहां पर जो कि एम्पेरिकली प्रूवन नहीं होती है। एम्पेरिकली प्रूवन होने का मतलब रहता है कि किसी एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन या किसी तरीके से हम लोगों ने वेरीफाई नहीं किया होता है कि ये अब साइंस बन चुकी है, और देखा जाए कि वो एक तरह का ब्रिज मान लिया जाता है साइंस और मैथमेटिक्स के बीच में। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। मैथमेटिक्स की मदद से हम लोग फिजिक्स को समझते हैं, और वो मैथमेटिक्स तब तक रहती है जब तक हम लोग उसको एम्पेरिकली देख नहीं लेते कि ये सही में काम करते हुए दिख रही है, फिर वहां हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं। लेकिन ये चीज ब्रेक थ्रू अवार्ड में नहीं होती है, और यहीं पर ही मेरा फिर इसके ऊपर नेक्स्ट लाइक क्वेश्चन आएगा कि ब्रेक थ्रू अवार्ड देखा जाए तो इस रेस्ट्रिक्शन पे नहीं है कि इट हैज टू बी प्रूवन साइन। ब्रेक थ्रू अवार्ड स्ट्रिंग थ्योरी के ऊपर भी दिए गए हैं। ब्रेक थ्रू अवार्ड की बात किया जाए तो उसका अमाउंट जो रहता है, प्राइज अमाउंट रहता है, वो नोबेल प्राइज से ज्यादा रहता है। तो ब्रेक थ्रू अवार्ड के बारे में क्या कहना है? हाउ इज इट डिफरेंट than Nobel Prize, and why is it not as famous as Nobel Prize? Maybe because historically इतने great लोग associated है, but I want to know your take, Rajan. मेरे ख्याल से ना, मैं पहले इस पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। मैंने रिसेंटली ना ऐसा मतलब एक ऐसा मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। जब भी बोर होता हूँ मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ मैथ का प्रॉब्लम। तो एक बहुत सुंदर से मेरे को लाइन देखने को मिली, मेरे को बुक का नाम नहीं याद है, बट उसमें बता रहे थे कि मैथमेटिक्स हैज नो मीनिंग जब तक हम उसे दें ना, उसका कोई मीनिंग नहीं है। और दूसरी जो मैं खुद हमेशा बोलता हूँ अपने लेक्चर में कि फिजिक्स विदाउट मैथमेटिक्स इज मैजिक। नाइस। तो ये दोनों कितनी बढ़िया बातें मैच होती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग थ्योरी, अब हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि स्ट्रिंग थ्योरी बिल्कुल गलत है ना? एटलीस्ट मैथमेटिक्स तो है ना उसके अंदर, लेकिन उसको कोई नोबेल प्राइज क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है। वही नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल वाली बात आ गई कि वो साइंस नहीं मानी जा रही है अभी, उसको एक फिलोसफी का पार्ट या फिर एक मैथमेटिक्स का पार्ट बोल सकते हैं। उसमें ब्रेक थ्रू प्राइजेस दे सकते हैं कि भाई तुमने मैथमेटिक्स में अच्छा काम किया। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्षितिज, क्या नेम है उनका, जो फिजिसिस्ट हैं लेकिन उनको मैथ के लिए फील्ड प्राइज एडवर्ड मिला। विटन। हाँ, विटन है ना? हाँ, तो विटन है उनको, अरे उनको तो फील्ड प्राइज मिला, वो तो फिजिसिस्ट है। और मेरे ख्याल से फील्ड मेडल ज्यादा होता है, क्या वर्ड यूज करना चाहिए मेरे ख्याल से, वो भी उतने ही लेवल का होता है वुड से नोबेल प्राइज जितना बड़ा फील्ड मेडल। और फील्ड मेडल तो मेरे ख्याल से 5 साल में दिया जाता है एक बार, जहां तक मुझे याद आ रहा है। नोबेल प्राइज तो फिर भी हर साल दे रहे हैं, तो वो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और मैथमेटिशियंस को इतनी मुश्किल से मिलता है, तो फिजिसिस्ट आके ले जाते हैं। तो आई वुड से कि मैथमेटिक्स जो है वो ऑल्दो ठीक है, नोबेल प्राइज नहीं है उसके लिए, बट ब्रेक थ्रू प्राइज है। और फील्ड मेडल जैसे हैं, एबल्स प्राइज, आई थिंक एबल प्राइज ही है ये फील्ड प्राइज, अगर मैं है ना सही बोल रहा हूँ। हाँ। तो फील्ड मेडल का ये भी है कि इसका ऐसा रहता है अवॉर्डेड टू 2, 3 और 4 मैथमेटिशियन अंडर 40 इयर्स, मतलब उसमें भी उनके अलग क्राइटेरियाज रहते हैं, ये सारे रहते हैं। वो और ज्यादा क्रेजी है, बिल्कुल। वो मतलब क्योंकि यहाँ पर नोबेल प्राइज का ट्रेंड देखा जाए तो ज्यादातर एजेड लोगों को मिल रहा है, ठीक है, जिन्होंने कई साल पहले काम किया, जो भी हम लोग जिनकी बात कर रहे हैं। लेकिन वहाँ 40 साल की रिस्ट्रिक्शन डाल दी गई है। ब्रेक थ्रू अवार्ड में हमारे में भी है शायद एक रिस्ट्रिक्शन ना एज का, शायद। किसमें? इसमें नोबेल प्राइज में तो 95 अभी इन्होंने लिखा था उनके उसी में 95 जो मैक्सिमम मिला है। अपर हो गई ना, लोअर भी लोअर। अच्छा, लोअर एक मुझे याद है, एक पर्सन था अपने फादर के साथ जा रहा था किसी शिप में, और उन्होंने एक्सीडेंटली कुछ डिस्कवर किया था, तो फादर सन को मिला था, तो वो काफी यंग था। वो यंगेस्ट अभी भी है कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा। हाँ शायद वही नाम था, मुझे एक बार आई हैव टू चेक।
बट नहीं, अभी स्क्रीन पे लिखा रहा है लॉरेंस ब्रैग, अच्छा 25 अच्छा, ओ केज में मिला था। नाइस नाइस, वेरी नाइस, हाँ, 25 यंग के एज। एज में। अच्छा सौरभ, मेरा लाइक तुमसे वही सवाल है रिलेटेड टू ब्रेक थ्रू अवार्ड और नोबेल प्राइज के बीच में ये जो डिफरेंसेस हैं, और इसके बारे में बात करना कि हमारे जो लाइक लेजेंडरी अशोक सेन है जिनको ब्रेक थ्रू अवार्ड भी मिला था, तो अगर नोबेल प्राइज के लिए ही होता तो क्या सीन होता? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? Yeah, it's a complicated question. तो बात ये है कि दोनों अलग अलग डोमेन्स हैं। एक देता है कि you did something and which is applied in the real life, be it given certain fields, और तुम कर सकते हो apply, empirically proven है, वो सब चीजें नोबेल प्राइज देता है। ब्रेक थ्रू प्राइज however takes the how do we understand even theoretically the entire universe as such. तो आई थिंक वो दोनों एक ऐसे डोमेन है जो डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ वो चीज अप्लाई करता है। सो इट रियली डिपेंड्स। आई थिंक it's really good कि breakthrough prize give such awards to these people. I think that's nice. By the way, I think it's about to start now. Yes, yes, exactly. I was about to say that. Välkommen till Kungliga Vetenskapsakademin och den här presskonferensen då vi ska presentera For årets those who don't know, Nobelpris पहले ये i लोग स्वीडिश में fysik. बोलेंगे फिर इंग्लिश में बोलेंगे, so just Welcome be to this patient. press conference and the Royal Swedish Academy of Sciences, where we will present this year's Nobel Prize in Physics. We will keep to our tradition and begin the presentation in Swedish and then continue in English. And you're of course welcome to ask questions in either language later on. Jag heter Hans Ellegren och är ständig sekreterare här på Kungliga Vetenskapsakademin. Till höger om mig sitter professor Ellen Måns, ordförande i Nobelkommittén för fysik. Och till vänster sitter professor Anders Irbeck, ledamot av Nobelkommittén för fysik och expert inom ämnesområdet. My name is Hans Ellegren. I'm the Secretary General of the Royal Swedish Academy of Sciences. And to my right is Professor Ellen Måns, chair of the Nobel Committee for Physics. And to my left is Professor Anders Irbeck, member of the Nobel Committee in Physics and expert in this field. Årets pris handlar om maskiner som lär sig. This year's prize is about machines that learn. Machine learning? Machine that learns. Kungliga Vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2024 års Nobelpris i fysik till John Hopfield, Princeton University, USA, Oh, nice. Jeffrey Hinton, University अरे? of Toronto, Kanada, John Hopfield. för grundläggande University of upptäckter och Toronto. uppfinningar som möjliggör Jeffrey. Oh, maskininlärning, nice. Machine learning and neural artificiella networks. neuronnätverk. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2024 Nobel Prize in Physics to John Hopfield, Princeton University, USA, and Jeffrey Hinton, University of Toronto, Canada, for Nice. चलो भाई, foundational बिल्कुल ही अलग हो गया यार। discoveries and This is the age of AI now. machine learning Serious. with Era artificial of AI. neural पता networks. लगे कोई AI ही मॉडल बोल रहा Professor है। Ellen Måns will now give us a short summary of the prize. Please. चलो डिटेल देखते हैं. Thank you. But well deserved, by the way. Learning is a fascinating ability of the human brain. We can recognize images and speech and associate them with memories and past experiences. Billions of neurons wired together give us unique cognitive abilities. Artificial neural networks are inspired by this network of neurons in our brains. This year's laureates for the Nobel Prize in Physics, John Hopfield and Jeffrey Hinton, used fundamental concepts from statistical physics to design artificial neural networks that function as associative memories and find patterns in large data sets. These artificial neural networks have been used to advance research across physics topics as diverse as particle physics, material science, and astrophysics.
They have also become part of our daily lives, for instance, in facial recognition and language translation. The laureates' discoveries and inventions form the building blocks of machine learning that can aid humans in making faster and more reliable decisions, for instance, when diagnosing medical conditions. However, while machine learning has enormous benefits, its rapid development has also raised concerns about our future. Collectively, humans carry the responsibility for using this new technology in a safe and ethical way for the greatest benefit of humankind. Thank you. Professor Ibeck, are you ready to give a more detailed presentation? Thank you. Please. Yeah. So this year's Nobel Prize in Physics is about artificial neural networks. Today, we know that this is a powerful computational approach. This was not evident 50 years ago, but it was known that we mammals are very good at pattern recognition by some sort of computation in our brains. And this sparked an interest in understanding the collective properties of networks of simplified neurons connected by couplings with a strength that could become weaker or it could become stronger. And the idea would then be to determine the strengths of the couplings to achieve a certain function, and doing that by training the network on many examples. A breakthrough came in 1982 when John Hopfield presented a dynamical network which could store and retrieve memories and associative memories. The memory had simple binary 0-1 nodes, all nodes connected, pairwise connected. The states that remained unchanged with time were identified as memories. Moreover, it was possible to introduce an energy similar to energies one has in studying magnetic systems in physics. And that energy had the property that it was low in the states corresponding to memories. Metaphorically, the memories were located in valleys of an energy landscape. When starting from a distorted pattern with then a higher energy, it would slide down, the network would slide down in energy to a nearby valley. And by this process, the distorted pattern could be corrected. In follow-up work, John Hopfield also showed that this network was robust in the sense that the binary nodes could be replaced with analog ones, and he also showed how the network could be used to solve difficult optimization problems. The creation and explorations of this network by John Hopfield was
milestone in our understanding of the computational abilities of artificial neural networks. Another important discovery came soon afterwards by Geoffrey Hinton and Terence Sejnowski. They created a stochastic version of the Hopfield network based on statistical physics and called the Boltzmann machine. So here the focus is on statistical distributions of patterns rather than Okay, by the way, Rajan has to individual leave. patterns. He has some other commitments. Thank you, Rajan, for joining. It's a generative model. Once trained, it can be used to generate new instances from the learned distribution. It had the same basic structure as Hopfield's network, but there were two types of nodes, hidden and visible ones. And the hidden nodes were there to make it possible for the network to learn more general distributions. So while theoretically interesting, in practice, the Boltzmann machine was initially of limited use. It was prohibitively demanding computationally. However, a version with fewer couplings called the restricted Boltzmann machine developed into a versatile tool, and I will soon mention it again. So far, I talked about recurrent networks with feedback connections. Many of today's deep learning methods involve feed-forward networks where information flow from an input layer to an output layer via hidden layers. In the 1980s, Hinton showed how such a network with hidden layers could be trained, and in that process, he also elucidated the important function of hidden layers. Then in the 1990s, there were applications of multi-layer networks, successful applications, for example, for the classification of handwritten digits. But the networks that one could train had relatively few couplings between consecutive layers. It remained a challenge to train more general deep structures with high connectivity between the layers. And here, and in fact, many gave up, but Hinton did not. And Hinton overcame this barrier by using this restricted Boltzmann machine. He used it to pre-train deep structures, and by this method, he succeeded in implementing examples of deep and dense structures, which was a breakthrough toward deep learning. Finally, so now I have talked about physics, how physics has been a driving force in behind innovation and development in artificial. Okay, so maybe I know कि शायद one of the It's papers also actually interesting use to this see ML how techniques. physics as अच्छा, a research field ये के बाद इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. is benefiting from these methods. And one example, well-established example here, is data analysis in particle physics and astrophysics. An increasingly important application is in modeling materials. For example, to search for novel, more efficient
solar cells. Yet another example is in explicit physics-based climate modeling to enable higher resolution. Finally, I want also to mention two applications, successful applications outside the physics area, protein structure prediction and analysis of medical images. So, thank you for your attention. Thank you, Professor Irbeck. I think we might have John Hopfield or Jeff Hinton. Oh, nice. Jeff Hinton with us on phone. Good morning, Professor Hinton. Good morning. Please accept our warmest congratulations to receiving the Nobel Prize in Physics. Thank you very much. How do you feel right now? I'm flabbergasted. I had no idea this would happen. I'm very surprised. Yeah, I could imagine. I'm sitting here in this beautiful session hall of the Royal Swedish Academy of Sciences. Here at the press conference, there are many interested journalists from both the Swedish and the international press. Would you be ready to take some questions from them? Yes. Yes, please. Sveriges Television. Thank you. My warmest congratulations to your achievements and to this year's Nobel Prize in Physics. My name is Susan Ritson, and my question comes from Swedish television. I know many of our viewers, also lay people, are very curious about the discoveries awarded here today. I wonder, do you remember when you realized your break? Okay, Saurabh, I think अब क्वेश्चन आंसर्स होंगे अबाउट देयर पर्सनल लाइफ एंड जर्नी, सो आई एम स्टॉपिंग इट हियर और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस नोबेल प्राइज के बारे में. ऑल राइट सौरभ, तो मेरे को लगा I was already. या तो सबसे पहले तो दिस वाज ऑब्वियसली वेरी 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 अनएक्सपेक्टेड कि ये वाला नोबेल प्राइज, आई मीन क्वांटम कंप्यूटिंग और ये सब बात कर रहे थे. पार्ट ऑफ द रीजन ये है कि जब हम लोग फिजिक्स के बारे में बात करते हैं तो मशीन लर्निंग और एआई सीधे दिमाग में नहीं आती है. बट नाउ इफ यू थिंक अबाउट इट, जो इंजीनियरिंग की इतनी आउटस्टैंडिंग फील्ड है उसका एक इतना इंपॉर्टेंट बेसिस स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मैं तो पहले कमेंट्स पढ़ रहा था, इतने फनी कमेंट्स आ रखे हैं. लेकिन हाँ, I think this is super unexpected. I was just thinking कि so if you take as a basis statistical physics, then I totally get it. ठीक है, क्यों? लेकिन as overall, if you think AI and ML, I think it's just kind of something which is like still in progress, at least in my opinion. Like 80s में तो neural networks का he gave the foundations in Hopfield, and then carried on the work by Jeffrey, right? And उन्होंने काम तो इतना किया which I guess we are using today so much, and through chat GPT things have escalated so far, है ना? कि this open AI thingy and generative so many AI has taken things very far. Exactly. The thing is, this was really unexpected from multiple angles. पहले तो ये भी कि एकदम से you said that एकदम से दिमाग में आता नहीं है. Although this has been very part of our lives in one way or the other, right? It is being used in multiple domains and probably being studied more. I think it's more on the studying level than on the application base, right? Like पता नहीं, I might be wrong here, but this is what I think, because so he mentioned how it is working in medical imaging and in astrophysics and particle physics, data interpretation, stuff like that. Yes, that's true. So it's helping in data interpretation and handling large data sets, astrophysics or particle physics में. Medical imaging में भी I think it's doing a fine job, but still it feels so many application, like हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं. वो तो उन्होंने बहुत handful of application बताया, but there are so many application. Yeah, I mean you can definitely apply on so many things, but the thing what I was wondering is the reliability of these things, because it's actually a research topic. ठीक है,
कि तुम कोई भी एक चीज उठाओ एंड उस पे चीज करने लगो, उसके बीच में क्या हो रहा है वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट मच, बट हमें कुछ आउटपुट मिल जाता है. So one of the basic questions comes when you use these artificial neural networks, है ना, in any physics domain. So तुमने यहाँ से डाला, you there's encoders and neural networks, they do something, exchange ब्लैक of बॉक्स. information. Exactly, हमें पता ही नहीं कि अंदर चल क्या रहा है भाई, वो हमें कुछ बाहर दे रहा है. So that's actually kind of very confusing, at least to my mind. I do not understand AI and neural networks that much in depth. So it was a nice surprise. इंडीड इट वाज अ नाइस सरप्राइज. और देखा जाए तो मतलब ऑब्वियसली पहले तो एकदम फिजिक्स के डोमेन का लगता भी नहीं है, बट अगेन जैसे उन्होंने बताया कि बोल्ट्जमान कपलिंग और वो सारी यूज कर करके मेमोरीज को कैसे स्टोर कर रहे हैं वो लोग, उस स्टेट को जिस तरीके से उन्होंने उस चीज को इनिशिएट किया, तो आई गेस पहली चीज तो वो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की फील्ड में देना चाह रहे थे, तो उस तरीके से वो जस्टिफाई हुआ है कि दिस इज बिकॉज ऑफ द स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हम लोग कैसे बोल्ट्जमान कपलिंग का यूज कर रहे हैं, फिर आगे कैसे मॉडिफाइड कर रहे हैं चीजें, जिसकी वजह से न्यूरल नेटवर्क में चीजें पास ऑन होना पॉसिबल हो जा रही है. और फिर Yeah. अगर अगर देखा जाए सौरभ, यस आई एग्री कि यहाँ पर एक ब्लैक बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट हमको नहीं पता है, बट हम लोग फिर ये भी तो देख रहे हैं कि हम लोगों को एक्यूरेसी बहुत मिल रही है. चलो लेट्स नॉट टॉक अबाउट फिजिक्स मतलब अभी के लिए, लेकिन हम लोगों ने मटेरियल्स की जो स्टडी होती है, जैसे उन्होंने सोलर सेल्स की स्टडी के लिए बात की थी, उन सब में हम लोग एक्यूरेटली देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही शानदार तरीके से बता रहा है कि कैसे काम कर रहा है. एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, फंडामेंटल फिजिक्स में जो डिस्कवरीज कई बार होती हैं उसके बेसिस पे कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स बनते हैं जो लेटर इतने एडवांस हो जाते हैं कि वो अपने में इंजीनियरिंग की एक फील्ड बन जाती है. आई थिंक यू एग्री ऑन दैट. इट हैपेंस टू बी द केस कि यहाँ पर ये चीज इतनी तेज एक्सेलरेट की है कि अभी ये हर जगह पे, और हम लोग इन अ वे इसको फंडामेंटली फिजिक्स या मैथ के अंदर ऐसा देखते नहीं. मैथ तो चलो फिर भी देखते, बट फिजिक्स तो किसी भी हालत में नहीं देखते. तो ये ऐसी That's चीज थी which was very surprising for me also. exactly, that is absolutely true. एकदम से देखना as a very fundamental subject is difficult. But now I come to think about this. अगर मैं एकदम fundamentally सोचूं, ठीक है, उसका जो basis है, it comes from statistical physics, right? Which is a well-established theory. Yes. You assume these Boltzmann constants and you assume these equations, and फिर तुम उसको directly apply करते हो to study and create an artificial neural network behaves kind of in a similar way as a real neural network might. So I think on that basis, if you look at fundamentally, I think that is something like which I can call a breakthrough, right? And it was done back in 84, I think, or maybe I might be wrong, but in 80s. अच्छा, उन्होंने जैसे एप्लीकेशन दिए तो देयर वाज एन इमेज ऑफ ब्लैक होल, एंड ऑब्वियसली दैट इज समथिंग जिसको देख के धक धक तो हुआ ही होगा. तो इसके बारे में व्हाट्स योर इनसाइट्स कि ब्लैक होल इमेजिंग में कैसे न्यूरल नेटवर्क्स काम आए? So actually, the image they used was a different image, in my opinion. I think जहाँ तक मेरे को ध्यान आ रहा है. So there was this one paper. I guess she's a fellow collaborator of us, in the EHT collaboration. So they used machine learning to train set of images and then create an image out of the real data based on the learning from simulations. ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि obviously it is highly biased क्योंकि तुम्हारे पास सिमुलेशंस हैं ऑलरेडी और तुम उस पर ट्रेन कर रहे हो डेटा को, एंड देन तुम रियल डेटा देख रहे हो और तुम ये क्वेश्चन पूछते हो कि भाई बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग how or what this real thing may look like. Right, this is what they did, and then of course they created this black hole image out of the data based on the learning of machine learning. So I think it does have immense learning. Another important aspect, which is like a research field, like not I but per se, but there is collaborator of ours who is actually working on this, is to understand and extract physical parameters from the data based on machine learning. ठीक है, तो you want to extract कि भाई वहाँ पे मेरे को एक ब्लैक होल दिख रहा है, ऐसी इमेज है उसकी, उससे उसका मास कितना हो सकता है, तो उसकी मास की कितनी accurate value होगी, right? You want to extract that particular value. That can be done on the basis of machine learning, and not just mass, like several other astrophysical values जो हमें चाहिए उस pertaining to black hole and उसके आसपास का जो भी matter है, all that. So that's actually still unexplored field. और अभी देखा जाए कि आज के टाइम में अगर पार्टिकल फिजिक्स की बात करो तो पार्टिकल फिजिक्स में जब हम लोग डेटा के साथ काम करते हैं तो इट हैज सिंपली बिकम
डेटा एनालिसिस ओनली, और उसमें मशीन लर्निंग काम आती ही आती है। आई रिमेम्बर जितने टाइम मैं आई यूज्ड टू वर्क ऑन लाइक उस पे काम पीथिया पे वर्क करता था, या फिर उसके बाद हम लोग ये हेवी आयन कोलिजन को सिमुलेट करें, दैट वाज ऑल बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग। उनको पहले से ट्रेन किया गया, तो उसकी पार्टिकल फिजिक्स तो फंडामेंटली पूरा मशीन लर्निंग पे ही चल रही है। अब तो वो पूरा बेस ही उसका हो चुका है। तो इन अ वे फिजिक्स तो बहुत ही अच्छे तरीके से, एंड आई स्टिल रिमेम्बर जब सजिटेरियस ए स्टार की इमेज आने वाली थी, हम लोग साथ में ही हम लोग वो पूरा इवेंट देख रहे थे हमारे क्लास में, तो उसमें भी उन्होंने बहुत डिटेल में बताया था कि कितने सारे अलग अलग मॉडल्स आए, हाउ दे यूज्ड लाइक मशीन लर्निंग टू लाइक डिसाइड करना क्या चूज करना है, कैसे करना है। सो इन अ वे इट्स रियली प्लेइंग अ बिग रोल इन आवर अंडरस्टैंडिंग। I think the prize was more about the fundamental concept than its application. I Yes. think जो fundamental concept है, it is in itself quite a breakthrough कि भाई तुम एक brain की तरह से map किए हुए neurons को you can create a kind of a small network, और वो somehow it is relatively working till some degree, what the actual might be, although super difficult, but still इसका एक basic functions बना. I think that is something quite breakthrough in itself. राइट, क्वाइट इंटरेस्टिंग, मतलब कि काफी इंटरेस्टिंग था ये। तो इस लाइव को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, तो सौरभ एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेते हैं हम दोनों के एंड से। राजन को जाना था बिकॉज ही हैड सम अदर कमिटमेंट, तो वो उसके कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं ले पाएंगे, बट मे बी फ्यूचर में कभी और बात कर लेंगे। तो सौरभ, what do you feel about this Nobel Prize and what are your future expectations? I think this is quite nice that finally this has been regarded. Although this has been part of our lives for so long, but we never really bothered so much. But now from this moment going forward, I think it may open up new avenues, right? And actually will promote AI and machine learning more towards the people who are pursuing their studies, the bachelors, undergrads, and masters and PhD. I think इसमें you can see a nice growth as well. Like अगर तुम similar past Nobel prizes और उसके related दे, so I think this is, and actually इस time पे आया ये, ऐसा नहीं है कुछ कि अभी एकदम hot topic नहीं है और बहुत पहले था hot topic, like gravitation waves or something like that. Like even right now this is quite a hot topic, AI ML stuff. स्पेशली जब से जनरेटिव एआई, चैट जीपीटी और जेमिनी और ये सब आए हैं, एआई का क्रेज एकदम स्काई रॉकेट, और उसके बाद फिर ये सारी चीजें आने लग गई। इमेज जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सौरा मॉडल्स आ रहे हैं, वीडियो जनरेशन आ रहा है, लाइक अ लॉट ऑफ क्रेजी थिंग्स। मतलब मूवीज बना रहे हैं लोग केवल एआई के बेसिस पे। तो एआई हैज टेकन द इंटरनेट ऑल ओवर द प्लेस। एआई का अलग जो बैकग्राउंड इमेज है वो भी एआई जनरेटेड इमेज है। राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। हालांकि इससे रिलेटेड कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस और आते हैं, उसके बारे में हम लोग कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट मैं अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स यहाँ पर दूं तो अगेन, पहले तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, और अगर मैं देखूं तो धीरे धीरे हम लोग लास्ट 3 साल के, अगर मैं फिजिक्स नोबेल प्राइज का एनालिसिस करूं तो 3 साल पहले का जो गया था वो क्वांटम इंफॉर्मेशन पे गया था, विच इज वेरी थियोरेटिकल बट थोड़ा सा एप्लीकेशन। उसके बाद एटो सेकंड फिजिक्स पे गया था, विच इज अ बिट मोर एप्लीकेशन बेस्ड। अभी तो टोटली एप्लीकेशन बेस्ड है, बट एज यू सेड वो गया था उसके फिजिक्स के फंडामेंटल के लिए, एप्लीकेशन आना वो डिफरेंट चीज है। बट द रीजन आई पॉइंटेड दैट आउट बिकॉज एल्फ्रेड नोबेल का ये स्टेटमेंट था कि फिजिक्स नोबेल प्राइज या फिर नोबेल प्राइज उनको मिलना चाहिए जो कि ह्यूमैनिटी को बेनिफिट कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली फंडामेंटल साइंस ह्यूमैनिटी को बेनिफिट करता है, बट ये ऐसी फील्ड है जिसकी इमीडिएट बेनिफिट दिख जा रहे हैं, तो in that sense it is totally justified. Yeah, totally agreed. बिल्कुल। So thank you so much Saurabh for joining, and thank you all the people who have joined. काफी सारे लोग आए और बीच में गए, and I will be making a detailed video about this Nobel Prize. Probably मैं आज रात तक अपलोड कर दूंगा, और अगर आज रात तक नहीं तो कल सुबह तक तो कर ही दूंगा, but after this live only मैं immediately start कर दूंगा working on this video. I'll start working on it, and उसमें सारे इंसाइट्स रहेंगे कि ये नोबेल प्राइज क्या है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन होंगी, कुछ और आइडियाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सौरभ। फिर हम लोग मिलते हैं। ऑलराइट, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग, बाय।